Hello everyone. So from today we are going to start the new topic of our 11th syllabus, and that's meaning and fundamental of double entry system. Meaning and fundamental of double entry system. This is the second topic of our syllabus in the 11th standard. Okay. So in the today's lecture we have to learn what is the exact double entry system. Okay, and already in the first lesson we are having the idea regarding what is this double entry system. Okay, so all of you know that this double entry bookkeeping system is developed by an Italian merchant Luca di Borgo Pacioli. Okay, Italian merchant Luca di Borgo Pacioli developed this double entry bookkeeping system. And this Luca di Borgo Pacioli is an Italian merchant, and he developed this double entry bookkeeping system in 10th November 1494. Okay, Luca di Borgo Pacioli developed this double entry bookkeeping system in 10th November 1494. That's why 10th November we celebrated as an International Accounting Day. Okay, International Accounting Day. Okay, once again understand double entry bookkeeping system. Okay, this double entry bookkeeping system is developed by an Italian merchant Luca di Borgo Pacioli, and Luca di Borgo Pacioli developed this double entry bookkeeping system in year 94. Okay, in which date? 10th November 1494. That's why 10th November we celebrated as a International Accounting Day. 10th November 1494 में लुका दी बार्बो पैसियोली जो इटालियन मर्चेंट है, उस इटालियन मर्चेंट ने एक डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम जो है वो डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम डेवलप किए है. इसलिए हम लोग क्या करते हैं 10th नवंबर 1494 को हम लोग क्या कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे जो है उसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. समझ रहे हैं? याद रखिए हम लोग अकाउंटिंग स्टूडेंट्स हैं तो हमें ये चीज पता होना जरूरी है कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे वी सेलिब्रेटेड ऑन 10th November every year. Why? Because on 10th November 1494, Luca di Borgo Pacioli, who is an Italian merchant, developed this double entry bookkeeping system. Okay, so now understand this double entry bookkeeping system, and already we are familiar with this double entry bookkeeping system. Okay, double entry bookkeeping system is totally based on three assumptions. Okay, so what is the first assumption of your double entry bookkeeping system? The first assumption of your double entry bookkeeping system is that in every transaction at least two parties must be involved. Okay, in every business transaction at least two parties must be involved. That is the first assumption of your double entry bookkeeping system. Then second assumption of your double entry bookkeeping system is that if one thing comes into the business, then definitely another thing goes out from the business. Okay, another thing goes out from the business. That's the second assumption of your double entry bookkeeping system. And the third assumption of your double entry bookkeeping system is that at least two parties are involved. Okay, out of that two parties there is a one party who going to receive the benefit, and definitely there is another party who gives the benefit. On these three assumptions, this totally double entry bookkeeping system is based on that three assumptions. समझ रहा है? ये जो डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम है, ये डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम इन तीन assumptions के ऊपर बेस्ड है. कौन सा assumption? अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो एटलीस्ट टू पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए. सेकंड, अगर कुछ आपके बिजनेस में आ रहा है तो डेफिनेटली कुछ आपके बिजनेस से चला जाएगा. एंड व्हाट इज द थर्ड थिंग? आपके जो दो पार्टीज के बीच में आप लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हो उसमें से एक पार्टी जो है वो बेनिफिट रिसीव करेगी और जो दूसरी पार्टी जो है वो क्या करेगी? बेनिफिट आपको देगी. इस थ्री बेस्ड assumptions के बेस पे जो है आपका डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम काम करता है. ओके, सो वी कंसीडर वन एग्जांपल एंड वी गोइंग टू अप्लाई दिस assumptions ऑन दैट एग्जांपल. हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं उसमें assumptions जो है वो मैच होते हैं क्या. सो व्हाट इज द ट्रांजैक्शन? द ट्रांजैक्शन इज दैट Mr. Amit purchased furniture of rupees
Mr. Amit purchased furniture of rupees 10,000. Mr. Amit purchased furniture of rupees 10,000 from Mr. Ajay. Okay, what is the transaction? Mr. Amit purchased फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम मिस्टर अजय. अमित ने क्या किया, फर्नीचर रुपीज 10,000 का जो है वो मिस्टर अजय से जो है उन्होंने परचेज किया है. So now we are going to apply all these three assumptions of your double entry bookkeeping system on this example. So what is the first assumption? In every business transaction at least two parties must be involved. अगर आप business transactions कर रहे हो तो उसमें at least कितने parties involved होने चाहिए? Minimum two parties involved होने चाहिए. तो देखते हैं हम लोग. So in this transaction Mr. Amit and Mr. Ajay, two parties are involved. Okay, so first assumption हमारा apply हो चुका है कि in every business transaction at least two parties must be involved, and in this transaction Mr. Amit and Mr. Ajay, two parties are involved. Then what is the second assumption? If one thing comes into the business, then definitely another thing goes out from the business. So we thinking with the point of view of Mr. Amit. Okay, what is the assumption? If one thing comes into the business, then definitely another thing goes out from the business. So now looking this example, Mr. Amit purchased furniture of rupees 10,000. Means what? Mr. Amit जो है वो Mr. Amit ने 10,000 rupees के furniture purchased किए हुए. So what is the second assumption? If one thing comes into the business, then another thing goes out from the business. So with the point of view of Mr. Amit के point of view से अगर हम लोग देखेंगे तो furniture जो है आपके बिजनेस में इन हो रहा है, समझ रहा है, फर्नीचर आपके बिजनेस में आ रहा है. ओके, एंड व्हाट इज द assumption? If one thing comes into the business, then definitely another thing goes out from the business. So with the point of view of Mr. Amit, furniture comes into the business and cash goes out from the business. Okay, so second assumption भी अपना अप्लाई हो चुका है. So देखते हैं सेम assumption हम लोग मिस्टर अजय के ऊपर डाल के. So with the point of view of Mr. Ajay, क्या हो रहा है? With the point of Mr. Ajay, cash of rupees 10,000 comes in. समझ रहा है? उनके पास 10,000 रुपीस की कैश आ रही है and furniture of rupees 10,000 goes out. Okay, furniture of rupees 10,000 goes out. तो समझ रहा है? Second assumption भी apply हो रहा है. What is the first assumption? In every business transaction at least two parties must be involved. So in this transaction Mr. Amit and Mr. Ajay, two parties are involved. What is the second assumption? If one thing comes into the business, so definitely another thing goes out from the business. So अमित के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा फर्नीचर आ रहा है तो कैश बिजनेस से जा रहा है. मिस्टर अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखा सो कैश आ रहा है और फर्नीचर उसके बिजनेस से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है. And what is the last assumption? The third assumption, in every business transaction there is one party who going to receive the benefit and there is another party who gives the benefit. So now take this example. In this example Mr. Amit purchased the furniture. Means what? Amit क्या कर रहा है? Furniture purchase कर रहा है. मतलब अमित को जो है benefit अमित receive कर रहा है in the point of view of furniture. और उसे furniture कौन दे रहा है? So Mr. Ajay जो है वो Mr. Ajay उन्हें furniture दे रहा है. मतलब in this transaction Mr. Amit is a person who going to receive the benefit and Ajay is another person who gives the benefit. Okay, and that is the total logic behind this double entry system. समझ रहा है आपको? Your double entry bookkeeping system is totally based on three assumptions. What is the first assumption? In every business transaction at least two parties must be involved. If one thing comes into the business, then definitely another thing goes out from the business. And what is the last assumption? Out of these two parties, there is a one party who going to receive the benefit and one party who gives the benefit. So now understand how double entry bookkeeping system work. Okay, how double entry bookkeeping system work. When we record the business transaction using double entry bookkeeping system, we have to record all these business transactions in the systematically manner. Okay, so when we record all these business transactions in the double entry bookkeeping system in the format of debit and in the format of credit, it is known as the double entry bookkeeping system. Okay, when we record all the business transaction in the books of accounts in the format of debit and in the format of credit, it is known as the double entry bookkeeping system. अगर हम लोग double entry bookkeeping system में अगर हम लोग transactions record कर रहे हैं तो definitely transactions हम लोग किस format में record करते हैं? Debit and credit. Okay, so as per the logic of double entry bookkeeping system, in every business transaction, if there is a one account debited, so definitely there is another correspondence account is there which is credited.
डबल एंट्री सिस्टम आपको ये बता रहा है कि आपके अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो डेफिनेटली दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा सेम अमाउंट से। और जो हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में लिखते हैं उसे हम लोग क्या लिखते हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं कि हम लोग ट्रांजैक्शंस लिख रहे हैं। समझ रहे हैं? When we record the business transaction in the format of debit and credit, it comes under the category of your double entry bookkeeping system, because the very main and important जो है assumption of your double entry bookkeeping system that in every business transaction every debit must want a correspondence credit. This is a very important assumption of your double entry bookkeeping system. What is the assumption? In every business transaction every debit must wants a correspondence credit. आपका जितना डेबिट जा रहा है उसके सेम अमाउंट के साथ आपको क्रेडिट भी होना चाहिए। मतलब अभी का एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करेंगे कि मिस्टर अमित परचेज द फर्नीचर ऑफ ₹10,000, मिस्टर अमित ने फर्नीचर 10,000 का परचेज किया, तो हम लोग अकाउंट्स पे कैसे लिखेंगे, तो हम लोग अकाउंट्स में ऐसे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू कैश अकाउंट ₹10,000। ओके, हम लोग अकाउंटेंसी में इस लैंग्वेज में लिखेंगे। अभी तक हमने अकाउंट्स के टाइप्स नहीं पढ़े हैं, अभी तक हमने अकाउंट्स के रूल्स नहीं पढ़े, इसलिए आपको जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है पता नहीं है, लेकिन आपको एक एग्जाम से ये समझ सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट एवरी डेबिट मस्ट वांट्स अ करस्पॉन्डेंस क्रेडिट। आपके जितने डेबिट आप कर रहे हो उसके अमाउंट के साथ आपको क्रेडिट भी करना चाहिए। तो आपका फर्नीचर अकाउंट ₹10,000 के साथ डेबिट हुआ है, तो आपका कैश अकाउंट भी ₹10,000 के साथ क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। समझ रहा है? What is the basic assumption in the double entry bookkeeping system? In the double entry bookkeeping system, we have to record all the business transaction in the format of debit and credit. Okay, in the double entry bookkeeping system, we have to record all the business transaction in the format of debit and credit, and every debit must wants a correspondence credit. आपको जितने अमाउंट के साथ डेबिट हो रहा है, आपको सेम अमाउंट के साथ दूसरी कोई ना कोई चीज क्रेडिट करनी पड़ेगी, and this is a very important assumption of your double entry bookkeeping system. So now we have to learn the various accounting systems by which we can record all these business transactions. ओके, अब हम लोग देखेंगे वेरियस दूसरे कौन से डिफरेंट टाइप की मेथड्स है जिसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स जो है वो अकाउंट्स हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। सो द फर्स्ट सिस्टम दैट्स योर इंडियन सिस्टम, द फर्स्ट सिस्टम दैट्स योर इंडियन सिस्टम। ओके, so Indian system is also one system by which we can record all the business transactions, okay, in the systematical format. So first understand what is this Indian system. Okay, in Indian system we can record all the business transactions into the local languages. Okay, what happens in the Indian system? In the Indian system we can record all the business related transactions into the local languages. Means under the Indian system we can record all these business transactions in the books of account in the language such as Hindi is the local language, Urdu or Marwadi. Okay, so what is the drawback of Indian system? In the Indian system we can record all the business transactions into the local language. Indian system में अगर हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो हम जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो इंडियन लैंग्वेजेस में मेंटेन करते हैं, जो इंडिया की लोकल लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल हम लोग हिंदी में मेंटेन कर सकते हैं, वी कैन रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द उर्दू लैंग्वेज, वी कैन आल्सो रिकॉर्ड दिस बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द मारवाड़ी लैंग्वेज आल्सो, एंड द रिकॉर्ड in which we record the business transaction in the Indian language, it is known as your Mahajani Deshinama system. Okay, which system? Mahajani Deshinama system. Okay, the system in which we can record this business transaction in the local languages, this system is known as your Mahajani Deshinama system. मतलब इंडियन सिस्टम में हम लोग जो लोकल लैंग्वेजेस में अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, महाजनी देशीनामा सिस्टम। इसे हम लोग क्या कहते हैं, महाजनी देशीनामा सिस्टम। सो हाउ वी कैन रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस अंडर द महाजनी देशीनामा सिस्टम। हम लोग महाजनी देशीनामा सिस्टम के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस हम लोग कैसे लिखते हैं? सो टू मेंटेन द बिजनेस ट्रांजैक्शन अंडर दिस इंडियन सिस्टम और टू मेंटेन ऑल दिस बिजनेस ट्रांजैक्शन अंडर महाजनी देशीनामा सिस्टम, we have to maintain two long books and this book is known as Bahikhat. Okay, Bahikhat and Kirtan.
Okay, these two books we maintain to record all this business transaction in the Indian system. हम जो इंडियन सिस्टम में जो ट्रांजैक्शंस लिखते हैं वो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस लिखने के लिए दो जो लॉन्ग बुक्स हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो फर्स्ट हम लोग कहते हैं उसे वहीकत एंड सेकंड हम लोग क्या कहते हैं? किर्द। किर्द और वहीकत के जो दो लॉन्ग बुक्स होते हैं उस दो लॉन्ग बुक्स में हम लोग क्या करते हैं? ऑल दिस बिजनेस ट्रांजैक्शंस लिखते हैं इंडियन सिस्टम के अंदर। But once again, what is the drawback of your Indian system? The very important drawback of your Indian system is that your Indian system is totally unscientific. Okay, your Indian system is totally unscientific because your Indian system does not follow the rules and regulations of the bookkeeping and the accountancy. If we record the business transaction under the Indian system, what is the drawback? This Indian system is totally unscientific. Why? Because your Indian system does not follow rules and regulations of the bookkeeping and the accountancy. हमारे bookkeeping and the accountancy के जो rules and regulations है, वो rules and regulations जो है वो Indian system के अंदर जो है वो follow किए नहीं जाते, इसलिए Indian system को हम लोग unscientific method of accountancy कहते हैं। समझ रहा है? फिर से एक बार समझ लीजिए व्हाट इज इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारे लोकल लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन रिकॉर्ड इन द हिंदी, उर्दू और द मारवाड़ी लैंग्वेज। ओके, और इस इंडियन सिस्टम में जो हम लोग ट्रांजैक्शंस लिखते हैं उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? महाजनी देशीनामा सिस्टम। उसे हम लोग क्या कहते हैं? महाजनी देशीनामा सिस्टम। एंड व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस महाजनी देशीनामा सिस्टम? इज टोटली अनसाइंटिफिक। व्हाई? बिकॉज़ इट डज नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ योर बुक कीपिंग एंड द अकाउंटेंसी। हमारे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के रूल्स हम लोग फॉलो नहीं करते, मतलब वी डज नॉट रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द फॉर्मेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्मेट में नहीं लिखते। दैट्स व्हाई दिस इंडियन सिस्टम इज टोटली अनसाइंटिफिक method of recording business transactions. Okay, then in the Indian system to record all your business transaction under Mahajani Deshinama system, we maintain two long books that is known as your Vahikat and Kirda. Okay, this is known as the Vahikat and the Kirda. But what is the drawback of your Indian system? Your Indian system is totally unscientific. Why? Because the Indian system does not follow the rule of डेबिट एंड क्रेडिट। इफ योर इंडियन सिस्टम डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ डेबिट एंड द क्रेडिट, मतलब आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के रूल्स जो है वो इंडियन सिस्टम के अंदर फॉलो नहीं किए जाते, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द बुक कीपिंग एंड द अकाउंटेंसी रिलेटेड transactions. Okay, but still in the India, small businessmen still use this Indian system to record all the business transaction. पर आज भी इंडिया में जो small ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन से, वो क्या करते हैं? इंडियन सिस्टम को फॉलो करते हैं बिजनेस रिलेटेड अकाउंटेंट्स जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस इंडियन सिस्टम। देन नेक्स्ट सिस्टम बाय व्हिच वी कैन रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस in the books of accounts, and that second system is known as English system. Okay, what is the second system? The second system is your English system. Okay, what is the first system we learn? That Indian system, and the second system in which also we can record all these business transactions of your bookkeeping and the accountancy, that's English system. And English system having two systems, and that first system, that's your single entry system. That's your single entry system. And the second English system is known as your double entry system. The second system is known as your double entry system. Okay, so now we have to understand this English system one by one. So first we start with the single entry system. So the first we start with the single entry system. Okay. So now understand what is this single entry system. What is this single entry system? Okay. So in our 11th syllabus in the second semester we are having separate topic that single entry system. हमारा सिलेबस में लास्ट में सेकंड पार्ट में सेकंड सेमेस्टर में जो है एक हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम नाम का सेपरेट टॉपिक है, उसमें आपको डिटेल में सिंगल एंट्री सिस्टम समझ में आएगा। बट नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सिंगल एंट्री सिस्टम। सो व्हाट इज द फर्स्ट ड्रॉबैक? लाइक अ इंडियन सिस्टम, योर सिंगल एंट्री सिस्टम इज आल्सो टोटली अनसाइंटिफिक। ओके, likewise your Indian system, your single entry system is also totally unscientific.
So now understand why this single entry system is known as the unscientific, or this single entry system is also known as the incomplete method of recording. Okay, this is also known as incomplete method of recording. सिंगल एंट्री सिस्टम को हम लोग अनसाइंटिफिक मेथड भी कह सकते हैं, या योर सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज आल्सो इनकम्प्लीट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन. इसे हम लोग इनकम्प्लीट मेथड कहते हैं. सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाई दिस सिंगल एंट्री सिस्टम इज नोन एज इनकम्प्लीट system or incomplete method of the record. Why? Because under single entry system we can record the only transaction regarding the cash, and we can record only transactions regarding to the personal accounts of your customers. समझ रहे हैं? मतलब अब जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जब आप लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हो, या when you record all your business transactions under the single entry system, what is the very big drawback? That you maintain only two accounts, that's the cash and the personal account. सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर अगर हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो सिर्फ हम लोग कैश रिलेटेड एंड पर्सनल जो पर्सन होते हैं, आपके कस्टमर्स होते हैं, सिर्फ आप उनके रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस लिखते हो या उनके रिलेटेड ही आप जो हो वो बुक्स मेंटेन करते हो. दैट्स व्हाई दिस सिंगल एंट्री सिस्टम इज नोन एज द इनकम्प्लीट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग. क्योंकि सिर्फ आप अगर कैश रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस लिखोगे, अगर आप पर्सनल रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस लिखोगे, तो फिर आप जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी? यू हैव टू रिकॉर्ड इफ यू पेड द रेंट, यू हैव टू रिकॉर्ड ऑन रेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन. अगर आप लोग रेंट पेड कर रहे हो या रेंट रिसीव कर रहे हो तो आपको रेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी लिखने पड़ेंगे. इफ यू मेक सर्टेन काइंड ऑफ द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर आपको बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हुए, सो यू हैव टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. इफ यू अर्न एनी काइंड ऑफ द इनकम और गेन, ओके, अगर आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस में कुछ भी इनकम या गेन हो रहा है तो आपको उस रिलेटेड भी ट्रांजैक्शंस लिखने पड़ेंगे. बट व्हाट इज द ड्रॉबैक? अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम वी जस्ट रिकॉर्ड the business transaction regarding cash and the personal accounts. Okay, हम सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, तो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? और अगर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है, दैट्स व्हाई सिंगल एंट्री सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग और इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी. समझ रहा है? Why? Because under single entry system we just maintain the accounts regarding cash and the personal. We does not recording any transactions regarding expenses and losses. We does not maintaining accountings related to the income and gains. That's why single entry system is known as incomplete method of the accountancy, or the single entry system is also known as what? Incomplete or unscientific method of the bookkeeping and the accountancy. And if we prepare the accounts using this single entry system, what is another drawback? We cannot get true and fair or accurate information regarding our business. अगर हम लोग सिंगल एंट्री के अंदर अगर हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, या अगर हम लोग सिंगल एंट्री के अंदर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो हमें ट्रू एंड फेयर पोजीशन हमारे बिजनेस की कभी भी पता नहीं चलेगी, या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं चलेगी. दैट्स व्हाई सिंगल एंट्री सिस्टम भी जो है वो प्रैक्टिकली हम लोग जो है वो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए यूज नहीं करते. But still, small business organizations use this single entry system to record your books of accounts or maintain your books of accounts or to record your business related transaction. But what is the drawback? Single entry system is also unscientific method of the bookkeeping and the accountancy. So that's a drawback of your single entry system. So now understand second English system. And that's we already learned, that's your double entry bookkeeping system. This system double entry bookkeeping system. Okay, so this double entry bookkeeping system first of all is a totally scientific method. It is a totally scientific method, and nowadays all over in the world double entry bookkeeping system is used to record all your business transactions into the systematically manner. Why? Because your double entry bookkeeping system follow the rule of debit and credit. Because your double entry bookkeeping system follow the rules of the debit and the credit. And now
all over in the world we use this double entry bookkeeping system to record all business transactions into the systematically manner. Why? The first upon the double entry bookkeeping system is totally scientific method in which we can record all the business transactions in the format of debit and credit. That's why now all over in the world double entry bookkeeping system is used to record all your business related transactions. So I hope you understood today's lecture. So once again I revised today's lecture. Okay, so what we learn in the today's lecture? So first upon we think what we learn regarding double entry bookkeeping system. Okay, who developed this double entry bookkeeping system? Luca di Borgo Pacioli, who is an Italian merchant. He developed this double entry bookkeeping system. Okay, in which year he developed this double entry bookkeeping system? In year 1494, but on which date? 10th November 1494. That's why 10th November 1494 celebrated as the International Accounting Day in all over the world. Then what is the basic assumption of your double entry bookkeeping system? The basic assumption of our double entry bookkeeping system is what? In every business transaction at least two parties must be involved. What is the second assumption? If one thing comes into the business, then definitely another thing goes out from the business. And what is the last assumption? In every business transaction at least there is a one party who is going to receive the benefit and there is another party who gives the benefit. That is the basic assumption. And what happens in the double entry bookkeeping system? Under the double entry bookkeeping system, we record all the business transactions using the rules of debit and credit. And what is the basic rule of debit and credit? Every debit must correspond as credit. आपके जितने अमाउंट के साथ आपका एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, सेम अमाउंट के साथ दूसरा अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए. This is the basic assumption of this double entry bookkeeping system. Then we learn the various systems by which also we can record the business transaction. In that first system we learn what is the system? That's your Indian system. So what happens in the Indian system? In the Indian system we can record the business transaction into the local languages such as Hindi, Urdu, Gujarati, Marwadi. Okay, and this your Indian system is also known as what? Mahajani Deshinama system. So to record the business transaction under Mahajani Deshinama system we use two long books, that is known as your Bhaikhat and Kirda. Okay, but what is the drawback of your Indian system? The drawback of your Indian system that it is a totally unscientific method of the accountancy. Why? Because your Indian system does not follow the rules and regulations of debit and credit. So that's why it is an unscientific method. But still in the India, small trader or the business organization use this system, Indian system, to record all the business transactions. Okay, then we learn the second system, that's your English system. So what is the first system? That's your single entry system. Single entry system is also known as your incomplete method of recording, or your single entry system is also unscientific. Why? Because under single entry system we maintain just cash and personal accounts related transactions. But we have to record, when we run the business organization, we have to record the transactions related expenses and losses. We have to record the transactions related to income and gains. But in the single entry system we just record the personal accounts and cash related transactions. That why if we use the single entry system to record all the business transactions, we cannot get the accurate information regarding our business. But that's why in this system, this single entry system is also totally unscientific, but small business organizations still use this single entry system to record the business transaction. Okay, and what is the most accurate system in which we have to record the business transaction? That's your double entry bookkeeping system. Why? Because double entry bookkeeping system is a scientific method and it follows the rule of debit and credit. That's why now all over in the world we use this double entry bookkeeping system to record business related transaction. Okay, so I hope you understood the today's lecture. Okay, so the next upcoming lectures are very important. Why? Because in the next lectures we have to learn actual accountancy. Okay, so in the next lecture what we have to learn? We have to learn the various types of the accounts. Then we have to learn the various basic rules. This basic rules is also known as the golden rules of the accountancy. Okay, so be concentrated from the next lectures. Okay, so I hope you understood today's lecture. So go through these lectures, okay, one by one once again. Okay, and from tomorrow or in the next lecture I am going to start the various types of the accounts. Okay, this is a very important lecture with the important lecture regarding to our subject. Okay, so thank you so much.